हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट फॉर द सब्जेक्ट कोड BEGLA-135 English in daily life. This assignment is of 100 marks. It consists of 3 sections. In first section, we have a reading comprehension, जिसके बाद हमें 3 से 4 questions आंसर करने हैं. In second section, we have a little part of grammar, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और सेकंड क्वेश्चन में हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है. सेक्शन सी जो है हमारा वो राइटिंग टास्क है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बायोग्राफिकल स्केच लिखना है अपने कोई भी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, और सेकंड में हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है, और थर्ड में हमारा है डायलॉग राइटिंग between an Ignou student and an Ignou help desk admission in charge. We'll come back to the section A and then we'll also do questions after that. पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे. A great mass of something means a great amount. When the new method of manufacturing articles in great numbers was introduced, a new name was wanted for it, and mass production was the one that came into use. सो फर्स्ट पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि मास प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है. जब भी कोई भी आर्टिकल बहुत ही लार्जर क्वांटिटी में बनाया जाता है या मैन्युफैक्चर करा जाता है, उस प्रोसेस को हम मास प्रोडक्शन कहते हैं. इन सेकेंड पैराग्राफ, इन व्हाट वेज डज मास प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द ओल्डर मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर. Formerly, a craftsman or a skilled workman often made the whole of an article himself by hand. He put into his work all his skill, all his experience. He was proud of the fruits of his labor. His reputation, his standing among his fellows, depended on his skill and on his character. He would have been ashamed if any serious fault had appeared in his work. He was envied and admired by fellow craftsmen whose skill was not equal to his own. Articles made in this way could not be mass produced. Each article differed slightly from the others. In every one, there was something of the maker's individuality. The finished article was sold at high price, the price representing the time and the skill of the craftsman who had made it. So, in second paragraph, we are talking about जो मास प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं उन प्रोडक्ट से जो ओल्डर टाइम्स में बनाए जाते थे और ओल्डर मेथड्स से मैन्युफैक्चर किए जाते थे. तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो एक आर्टिस्ट होता था या फिर एक क्राफ्ट्समैन होता था, वो एक एक आर्टिकल अपने हाथों से बनाता था. उस एक आर्टिकल को बनाने के लिए उसमें वह अपनी स्किल, अपना एक्सपीरियंस और अपना टाइम लगाता था और रिस्पॉन्सिबल होता था. जो भी रिज़ल्ट आता था उस आर्टिकल को बनाने के बाद, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो क्राफ्ट्समैन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था. उसकी स्किल को देख के, जो क्राफ्ट्समैन या फिर आर्टिस्ट की स्किल को देख के उसके जो फेलो क्राफ्ट्समैन थे वो उससे एनवी भी करते थे और उसे एडमायर भी करते थे. एनवी का मतलब होता है जलन और एडमायर का मतलब होता है एप्रिसिएशन. तो उसकी स्किल्स को देख के उसके फेलो क्राफ्ट्समैन उसको एनवी करते थे और उसको अप्रिशिएट भी करते थे, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसी स्किल नहीं थी. ऐसे आर्टिकल्स जो कि मास प्रोड्यूस हो सकते हैं उनमें ये खासियत नहीं होती है. ईच आर्टिकल, जो हमारे पुराने टाइम में जो आर्टिकल बनते थे, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हैंडमेड आर्टिकल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. उनके पास, हर एक प्रोडक्ट के पास अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है जो मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स के पास नहीं होती है. मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स के पास सेम शेप, सेम कलर, सेम साइज़ होता है, लेकिन जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वे काफ़ी कॉस्टली होते हैं. वो कॉस्टली क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एक आर्टिस्ट अपना टाइम और अपनी स्किल लगाता है, इसीलिए वो कॉस्टली सेल होते हैं. थर्ड पैराग्राफ, many such articles made long ago with loving care possess a quality and a beauty that mass-produced goods cannot equal. The wonderful pottery of ancient China, the lovely carpets of Persia, the engraved sword of Damascus, the silverware of the Middle Ages, all these things show the individual craftsmanship of their long-dead makers.
These articles were made for the rich and for those who were moderately well off. The poorer classes could not hope to possess work of art. Their household utensils, their clothes, and their farm tools were roughly and cheaply made, though very practical in serving the purposes for which they were designed. सो इन लास्ट पैराग्राफ वी आर टॉकिंग कि ऐसे आर्टिकल्स जो हैंडमेड होते हैं जिसमें काफ़ी स्किल और काफ़ी एक्सपीरियंस और टाइम लगता है, वो काफ़ी प्यार से बनाए जाते हैं, काफ़ी केयर से बनाए जाते हैं और उसके अंदर बहुत ही सुंदरता और क्वालिटी होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स के पास ऐसे प्रोडक्ट्स के पास क्वालिटी और ब्यूटी दोनों होती हैं और इनको मास प्रोडक्शन में मास लार्जर क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करना काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। द वंडरफुल पॉटरी ऑफ एंशंट चाइना की जो पॉटरी है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो काफ़ी फेमस है और वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी और हाई डिमांड प्लस हाई प्राइस में सेल होते हैं। द लवली कार्पेट्स ऑफ पर्शिया, द एनग्रेव्ड स्वॉर्ड ऑफ डेमस्कस, द सिल्वरवेयर ऑफ द मिडिल एजेस। सिल्वरवेयर इज लाइक यूटेंसिल। और ऐसे जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जो फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं लोग, सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो पुअर क्लासेस होती हैं या फिर जो मिडिल क्लास होते हैं, वे ऐसे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके जो यूटेंसिल्स होते हैं, उनके क्लोथ्स होते हैं, उनके जो टूल्स होते हैं, वे काफ़ी रफ़ और काफ़ी चीप होते हैं, लेकिन वह भी अपना पर्पस काफ़ी अच्छी तरीके से सर्व करते हैं। So that was our passage. Now we'll come to the questions. We have 4 questions in this. First question: how did the term mass production come into use? Mass production जो एक word है वो use में कैसे आया? When the new method of manufacturing articles in great numbers was introduced, a new name was wanted for it, and mass production was the one that came into use. सो जब हमारे आर्टिकल्स जो है लार्जर क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चर होने लगे, तो उसके लिए एक नाम चाहिए था और उस नाम के लिए उस प्रोसेस को वहाँ के लोगों ने नाम दिया मास प्रोडक्शन। सो दिस इज़ हाउ मास प्रोडक्शन कम इनटू यूज़। वाई आर द हैंडमेड आर्टिकल्स डियरर दैन मास प्रोड्यूस गुड्स? जो हैंडमेड आर्टिकल्स होते हैं वे इतने प्यारे क्यों होते हैं as compared to mass produced goods? Handcrafted products are expensive because of a very important reason, and that is they are handmade. It takes more time to make them. Machines are used for mass production and can possibly make hundreds of pieces in the time a craftsman finishes one product. जो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों एक्सपेंसिव होते हैं? क्योंकि वो हैंडमेड होते हैं। इट टेक्स मोर टाइम। उस हैंडमेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। मशीन्स जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ पीसेस जितने टाइम में बनाती हैं उतने टाइम में एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एक प्रोडक्ट फिनिश करता है। तो क्योंकि उसमें स्किल उसमें एक क्राफ्ट्समैन की स्किल, एक क्राफ्ट्समैन की नॉलेज और एक क्राफ्ट्समैन का काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। या सो द थर्ड क्वेश्चन: एन्यूमरेट द क्वालिटीज़ ऑफ द क्राफ्ट्समैन इन ओल्डर टाइम्स। ओल्डर टाइम्स में जो क्राफ्ट्समैन होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, उनकी ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो हमें लिखनी है। सो फॉर आंसर फॉर दिस इज: इन द पास्ट अ कॉम्पिटेंट क्राफ्ट्समैन, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्किलफुल, और artisan would frequently make an object entirely by hand. His reputation and his standing among his peers depended on his integrity and skill. His co-workers who lacked his level of skill liked and coveted him. सो पास्ट में क्या होता था, जो एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है वो एक प्रोडक्ट्स अपने हाथों से बनाता था। उसकी रेपुटेशन, उसके आसपास के लोगों में उसका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उसकी स्किल और उसकी इंटेग्रिटी पे वर्क करता था। हिज को वर्कर्स, जो उसके फेलो मैन होते थे, उसकी स्किल को देख के काफ़ी उसे एडमायर, लाइक प्लस कॉवेटेड करते थे। कॉवेटेड हिम मीन्स लाइक हेट, एंड लाइक मीन्स पसंद करना। तो उसकी स्किल्स को देख के काफ़ी लोग उसे लाइक भी करते थे और काफ़ी लोग उसे हेट भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज: गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। फर्स्ट इज मास प्रोडक्शन, नो सॉरी, या सो द आंसर फॉर दिस इज मास प्रोडक्शन, क्योंकि पूरे पैसेज में मास प्रोडक्शन के बारे में ही बात हुई है। सो मास प्रोडक्शन इज द एप्ट
title for the passage. Now in second question we have use the following words in sentences of your own. हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हमें. पहला वर्ड है पॉटरी. पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रोसेस. शी इज़ डूइंग अ पॉटरी नाइट क्लास. और यू कैन लाइक शी लाइक्स टू डू पोएट्री. एनवीड का मतलब होता है हमारा जलन. हर लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंड पर्सनल ऑस्टेंटेशन वर बोथ हेटेड एंड एनवीड. ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ या फिर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ. You can write an easy example in this of this word, like everyone envied her because of her beauty, or everyone envied her because of her skill. Third is individuality. It's a competent essay. Competent का मतलब होता है skillful, but it lacks individuality. Fourth, mass produced. The clothes they wear are cheap and mass produced. Fifth, we have engraved. Engraved का मतलब होता है जड़ा हुआ. The jeweler skillfully engraved the initials on the ring. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी. नाउ वी विल कम टू द ग्रामर पार्ट, दैट इज सेक्शन बी पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करना है और हमारे इस पे सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं. द पैसेंजर सेड विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली. सो एज वी नो दैट इनडायरेक्ट स्पीच में करते वक्त हमारे सारे पंचुएशन, सारे क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास सब हट जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फुल स्टॉप रहता है, और जो प्रेजेंट में हो रहा है वो सब पास्ट में हो जाता है. और जिस टोन में पूछते हैं उसी टोन में हमें आंसर भी करना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल द पैसेंजर सेड, ही सेड विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली. सो ही हैव आस्क्ड एन क्वेश्चन. तो हम इसका आंसर होगा द पैसेंजर आस्क्ड मी दैट व्हेन आई वुड लीव द कंपार्टमेंट. सेकंड, गांधी सेड हैवंट द राइट टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास. गांधी forbade us to travel first class. Third, the constable said don't you understand simple instructions. वो कांस्टेबल जो है वो प्यार से नहीं बोल रहा है, उसकी जो टोन है वो स्कोल्ड वाली टोन है, वो डांट रहा है. तो इसका आंसर होना चाहिए द कांस्टेबल स्कोल्ड अस दैट वी डिडंट अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस. Gandhi said, shall I not try to root out the disease of color prejudice? Gandhi asked if he would try to root out the disease of color prejudice. Fifth, the general manager said, hasn't justice been given to you? The manager confirmed if justice had not been given to us. The merchant said, isn't this injustice to be treated badly? The merchants told that it was the injustice to be treated badly. 7. Gandhi said, can't we lodge a strong protest? Gandhiji asked if we could not lodge a strong protest. We have 8 now. The official said, don't you know this is a different country? The official asked if we didn't know this is a different country. 9th, the official said, do you want me to throw you out? The official asked that did you want to throw me out? 10th, the official said, shall I call the police? The official asked that he should call the police. Now second question of section B. Rewrite the sentences using the correct form of the verb given in the bracket. It is a very easy question. जो भी word bracket में है उससे पहले हमें to लगाना है. Did you remember lock the safe? Did you remember to lock the safe? Second, Rita hoped get a bucket of clean water. Rita, okay, it's not hoped, it's hopped actually. Hopped means to jump. Rita hopped get a bucket of clean water. Rita hoped to get a bucket of clean water. The boss refused accept my resignation. The boss refused to accept my resignation. Usha hopes draw your portrait before the end of this month. Usha hopes to draw your portrait before the end of this month. My sister is afraid of heights. She refused to go rock climbing. My sister is afraid of heights. She refused to go rock climbing. My American friend invited me spend my summer holidays with her. My American friend invited me to spend my summer holidays with her. The air hostess asked the passengers fasten their seatbelts. The air hostess asked the passengers to fasten their
seedbeds. The women had come draw water from the well. The women had come to draw water from the well. They arranged meet after office hours. They arranged to meet after office hours. The Sherpa warned the mountaineers not smoke while using oxygen masks. The Sherpa warned the mountaineers not to smoke while using oxygen masks. Now we have section C, where we have to write a biographical sketch of your favorite sports person in about 250 words. आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं इस वीडियो से, और ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है. सो यहाँ पे हमने लिखा है पीटी उषा के बारे में. एवरीवन नोज शी वाज अ स्प्रिंटर, शी वाज अ रनर, शी वाज एन एथलीट. ओके, नाउ वी हैव विल स्टार्ट. PT Usha, this is her Kerala, or she was from South India, so it was her name, her full name, but in short we call her PT Usha, or Pioneer Express, as she was popularly known, was the reigning queen of Indian track and field for 2 decades. This golden girl was born on June 27, 1964, in a village called Kothali near Pirambura in Kozhikode district of Kerala. She was interested in sports right from her childhood days. In 1976, the Kerala government started a sports division for women in Kannur, where Usha started practicing under coach O.M. Nambiar. Her march to fame started in 1979 when she won the individual championship at the National School Games. In 1980, in her first international meet, she won 4 gold medals for India. Her biggest moment came when in 1984 Los Angeles Olympics she missed the bronze medal in the 400-meter finals by 1/100th of a second. In 1985, she won 5 gold medals and 1 bronze medal at the Asian Track and Field Championship in Jakarta, Indonesia. At the Seoul Asian Games, Usha won gold medals in the 200-meter, 400-meter, 400-meter hurdles and 4x400-meter relay categories. At the Beijing Asian Games, she won 3 silver medals for the India. In 1991, she married V. Srinivasan. After the birth of her son, she came back to athletics and won bronze medals in the 200-meter and 400-meter at the Asian Track Federation meet at Fukuoka in Japan in 1998. She retired from athletics in the year 2000 and set up her sports academy in Kerala. Awards and recognition. So there are many awards she won, but here we have mentioned just few. She won a Padma Shri in 1985, Arjun Award in 1983, and an award was also given to her by University of Calicut in 2018. Second, we have gender discrimination that is still prevalent in our societies. It is of 20 marks and we have to write it in 250 words. Gender discrimination is the unequal or disadvantageous treatment inflicted on someone because they belong to a specific gender. जब हमें कोई जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेट करता है कि आप लड़की हो, आप लड़के हो, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को हम बोलते हैं जेंडर discrimination. It is usually the women who usually have to face such gender discrimination. Education and learning opportunities. Gender-wise literacy rates in India showcase the wide gap between men and women. As per 2011 census data, effective literacy rates age 7 and above were 82.14% for men and 65.46% for women. Parents are unwilling to spend on girls' education because educating women is of no value as they will only serve their husbands and the in-laws in the future. इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी जगह प्रेवलेंट है. इसका एक बड़ा कारण है एजुकेशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो मेन में 82.14 है और वहीं विमेन में 65.46 है. तो काफ़ी बड़ा ये गैप है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. पेरेंट्स आज तक सोचते हैं लड़कियों को पढ़ाना इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी क्योंकि उन्हें आगे जाके अपने हस्बैंड्स की फैमिलीज़ और इन लॉज को ही संभालना है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. The Indian Constitution provides equal rights and privileges for both men and women, but most women across India don't enjoy these rights and opportunities guaranteed to them. This is because of a number of reasons. Gender-based discrimination across India can only be checked
when girls are not denied their chance to learn and grow in life. Girls, like boys, should get a great start in life in terms of educational opportunities. This will help them attain economic independence and help them be rightly equipped to contribute towards their upliftment and that of the society they are part of. Our treatment of women in the past brings us no glory or honor. Indian society has never been liberal and generous towards females. Unfortunately, the discrimination continues in one form or other even now. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है मेन और वुमेन दोनों को, लेकिन आज भी काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वुमेन ये राइट्स एंजॉय नहीं कर पाती है और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. गर्ल्स को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इनफैक्ट इन एजुकेशन स्पेशली, जो बॉयज़ को मिल जाती हैं. इससे हमारी सोसाइटी को काफ़ी हेल्प मिलेगी और उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में भी मदद मिलेगी. इंडियन सोसाइटी जो है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो कभी भी लिबरल और जेनरस फीमेल्स के टुवर्ड्स नहीं हुई है और डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अभी भी चलता आ रहा है. There have been many reforms to empower women. However, in certain states of India, there is a great imbalance in the male-female ratio. This is the result of special treatment given to boys in the family. Evil practices such as female feticide is quite common. India is a patriarchal society which likes to hold on to its traditional beliefs and practices. For instance, women living in rural areas are not allowed to go to school. They are asked to stay at home, do the household chores, and look after their little siblings. So, बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे एक्ट्स आए हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए, बट वे अभी भी फॉलो नहीं किए जाते हैं स्ट्रिक्टली. और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में मेल और फीमेल रेशियो का गैप बहुत ज़्यादा है. बॉयज़ हमेशा ज़्यादा ही रहे हैं गर्ल्स से. ये क्यों होता है? क्योंकि बॉयज़ को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है फैमिलीज़ में. उन्हें लगता है कि बॉयज़ आर बेटर देन गर्ल्स, बट लाइक थिंग्स हैव चेंज नाउ. उस टाइम में होता था इविल प्रैक्टिस सच एज फीमेल फीटिसाइड इज़ क्वाइट कॉमन. जब बॉयज़ को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, बॉयज़ को ऊपर माना जाता है गर्ल्स से, तो फीमेल फीटिसाइड बहुत कॉमन एक इविल प्रैक्टिस है जो हमारी सोसाइटी में आज भी लाइक कायम है. फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है जब फीमेल को गर्भ में ही उन्हें मार देते हैं. दैट इज़ फीमेल फीटिसाइड. उन्हें जन्म नहीं लेने देते हैं जस्ट बिकॉज वो एक लड़की होती है. इंडिया जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे काफ़ी टाइम तक मेल ने रूल करा है, मेल ने डोमिनेट करा है गर्ल्स को, विमेन को. और वो ट्रेडिशनल बिलीव्स पे और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा बिलीव करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रूरल एरियाज़ में जो थे, आज भी हमारे विलेजेस हैं जहाँ पे वुमेन को स्कूल जाने नहीं दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप घर पे बैठिए और अपने घर में भाई बहनों को संभालिए, घर के काम करिए. As soon as they hit puberty, they are married off, whether or not they are ready for it. Poverty and illiteracy play their part in such ill practices against women. So, जैसे ही उन्हें वो टीनेज हिट करती हैं, उन्हें प्यूबर्टी हिट करती है, वैसे ही उनकी शादी की जाती है बिना उनकी मर्ज़ी के. पॉवर्टी और इलिटरेसी बहुत एक बड़ा रीज़न है जो विमेन प्रैक्टिसेस जो होते हैं, इन प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन है, जो इन सबको बढ़ावा देता है. इलिटरेसी और पॉवर्टी काफ़ी दो एक मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से विमेन को ये सब सहना पड़ता है. Dowry deaths, marital rapes, etc. are the few of the evils of the society, still tormenting women everywhere from villages to the cities. Legislations for women remain merely words, at times unable to protect them. The Dowry Act, the Marriage Act, the Property Act should be enforced strictly. Eve teasing and sexual harassment of women should have no place in a civilized society. There should not be any kind of discrimination in the workplace. Wages of men and women should be equal. Reservation in jobs and legislatures must become obligatory and legal. Children should be made to understand the meaning or importance of gender equality in school so that they learn to respect and treat women with dignity at an early age. Only then gender discrimination in the society will gradually come to an end. जो डाउरी की वजह से डेथ्स होती हैं, मैरिटल रेप्स होते हैं, ये ऐसे इविल्स हैं जो विमेन को हर तरीके से टॉर्मेंट करते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं. और रूरल एरियाज़ में ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं.
जो हमारे एक्ट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एनफोर्स करे हैं, वे अभी भी फॉलो नहीं होते हैं और इन लॉज का फॉलो होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईव टीजिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी हम लोग को बैन करना पड़ेगा अगर हमें एक सिविलाइज सोसाइटी में रहना है तो। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस में, घर में, कहीं भी नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ मैन और जस्ट बिकॉज ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। वेजेस जो होने चाहिए, वेजेस का मतलब होता है सैलरी जो होनी चाहिए मेन और वुमेन की फॉर द सेम रोल शुड बी सेम। रिजर्वेशंस होनी चाहिए और बहुत कंपलसरी रिजर्वेशंस होनी चाहिए फॉर द फीमेल एंड मेन बोथ। एंड चिल्ड्रन शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड। एक स्कूल में एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें जेंडर इक्वालिटी काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ानी चाहिए, जिससे अर्ली एज में ही वह विमेन को इक्वली रिस्पेक्ट से ट्रीट करना बच्चे सीख जाएं। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ग्रेजुअली कम टू एन एंड, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ डायलॉग राइटिंग। सो डायलॉग राइटिंग इज़ बेसिकली बातचीत, दो लोगों में बातचीत। तो इसमें हमें एक इग्नू का स्टूडेंट और एक एडमिशन हेल्प डेस्क इंचार्ज से बात करनी है एंड वी हैव टू राइट इन 250 to 300 वर्ड। स्टूडेंट: Good morning, ma'am. I am a fresh graduate in art stream. I would like to have information about masters in Ignou. As I am working, so I cannot complete my study in regular classes. Admission desk in charge: Very good morning, dear student. Yes, Ignou has continuously striven to build an inclusive knowledge society through inclusive education. Student: Ma'am, in which subjects I have to take admission in Ignou? Admission desk in charge: See, there are so many options in Ignou. You must go through the prospectus once, and I will also surpass the information to you here as well. There are so many subjects like public administration, political science, history, sociology, Hindi, English, and many more. Student: What will be the admission fees? Admission help desk in charge: It will depend on the subject you will opt for, although approximately 7,000 per year fees will be there. Student: Any other charges? Admission help desk in charge: Yes, examination fees you have to pay at the time of filling examination form, which is 200 rupees per subject. Student: When the exams will be held? Admission help desk in charge: There are two admission cycles in Ignou, January and July. So if you will take admission in July 2022, then you can attempt first year examination in June 2023. Student: Will there be any assignment work? Ignou admission help desk in charge: Yeah, you have to complete your assignments in due time. 30% weightage is for assignment. Student: If I take admission in July 2022, when will I have to submit the assignment and where? Ignou admission help desk in charge: You have to submit your assignments in March 2023 at your study center. Student: But how I will come to know about the assignment questions? Ignou admission help desk in charge: Nothing to worry, dear. You can check all the things at official website of Ignou. Student: Thank you so much for the valuable information and your precious time. Ignou admission help desk in charge: Good luck. So that was it. Thank you.